But I'm giving you another 5 minutes. Okay, 10 minutes. Review all the content of organization of data, what I taught you people. Please. And मैं किसी को भी पूछूंगी कोई भी टॉपिक, यू हैव टू एक्सप्लेन द क्लास. आई एम गिविंग यू 10 minutes क्योंकि आज मैं नया कुछ शुरू नहीं करूंगी, आज मैं इसी को कंप्लीट करूंगी. Different classification of organization of data or methods of classification.
क्या हो गया देवांश? रितिका? Yes, ma'am. बी रेडी. देवांश? बेटा अपने आप को अनम्यूट करके रखो, म्यूट मत करो. देवांश, you are not audible to me, Devansh. Speak up. I'm going to remove you. Either you speak up or I will remove you from the class. Ma'am, now I'm audible. Yeah. Why are you not replying the answer? What are the methods of classification? Ritika, now you speak. Yes, ma'am. Ma'am, may I? Yes. Okay. So, ma'am, there are four methods or types of classification. First is on the basis of time, that is chronological or temporal classification. Second is on the basis of area, that is geographical or spatial area classification. Third is on the basis of magnitude, that is quantitative classification. And last is on the basis of attributes, that is qualitative classification. Okay. Now the next question is, what is statistical series? Statistical series. Samrit Kaur? What do you mean by statistical series, Samrit Kaur? Paridhi? Paridhi? Yes, ma'am. बेटा Yes, मेरे को ma'am. आज Am I एब्सेंटीज audible? की लिस्ट देना बेटा. एब्सेंटीज की कल डाला था एब्सेंटीज का लिस्ट. No, ma'am. मैंने प्रेजेंट का डाल दिया था गलती से, इसलिए फिर मैंने नहीं डिलीट बेटा किया. मैं मुझे एब्सेंट का डाल देती हूँ. एब्सेंटीज का लिस्ट देना बेटा आज से. Yes, ma'am. अभी से एब्सेंटीज का. हाँ सिर्फ एब्सेंटीज का लिस्ट देना, बाकी तो मेंटेन करते रहना अपना. Yes, ma'am. समरीत कौर? Yes, एंड ma'am. ऑफ द डे में जो क्लास में होगा. हाँ समरीत कौर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल सीरीज? What do you mean by statistical series, Samrit Kaur? What is the... यार ये सही नहीं हो रहा है यार, क्लास में बिल्कुल सही नहीं हो रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पढ़ा रही हूँ और तुम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है. चाणक्य. ओके. गलत बात है यार, बिल्कुल गलत बात है. श्रीवेली? श्रीवेली? Yes, ma'am. What did you ask about? I just joined the class right now. So could you repeat? Yeah. What do you mean by statistical series? Ma'am, can you repeat again? I am not able to hear you. Sorry. What do you mean by statistical series? What do you
mean by statistical series? Yes, ma'am. Statistical series are of two types, which is individual No, series what and do the you frequency mean? series. I want the meaning of statistical series, not the types of statistical series. Ma'am, the classification of data. No, beta. No. Ma'am, Samrit. ma'am, when data is presented in specific sequence or order. When the data are presented in a systematic manner, that is a statistical series. Anyone want to add anything to this? Please put your hands down. Paridi, you want to add? Sheesh, you want to add? Okay, Sheesh, tell me. Sheesh, Yes, ma'am. what you want to add to this Ma'am, statistical series? ma'am, I would like to add that this statistical series also contains of two types of variables. These are discrete variables No, and that is a continuous variables. type of statistical series that I will ask you later. That is a type of statistical series. Ma'am, I had this doubt. May I ask? No, beta. Yes, ma'am. Could we write it in a one sentence as like statistical series are the systematic arrangement of data? Like, could that be enough, or we need to have a long definition? No, when it is a definition, it is systematic, only one line definition. It is not a long definition. अगर हमेशा ध्यान रखना definition का मतलब होता है एक ही नंबर, तो एक नंबर जितना ही तुम्हें आंसर देना है. Okay, ma'am. Thank you. Now, please explain me the types of series. Explain the types of series. परिधि बम्बानी, कशिश कापड़ी, ये दो बच्चे हैं. मोहित आशी, नमन, ओके गुड. गुरनूर कालरा, वेरी गुड. और कौन कौन है, और किसको आता है स्टैटिस्टिकल सीरीज, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज? अभी किसी ने बोला तो था. शीश, तुम्हें भी तो आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज? शीर्ष, समरीत कौर, शीर्ष. हाँ. Sheesh is not replying. Okay. Bhavya Patel. Types of statistical series. Bhavya Patel. निकल गया क्या? नहीं. Types of statistical. Bhavya. भव्या, अगर मैंने रिमूव कर दिया तो यू कैन नॉट ऐड योरसेल्फ एंड मैं तुम्हें प्रेजेंट नहीं करूंगी. तो बेटर यू स्पीक अप. ओहो भव्या, ये दो आईडी से क्यों ज्वाइन हो रहा है तू? भव्य पटेल, कोई बात नहीं बेटा, अब नहीं आओगे क्लास में, जाने दो तुम. भूमिका, यार am I audible to you people or not? Yeah, Yes, Bhumika, ma'am. बोल. Yes, ma'am. Ma'am, the two types of statistical series are individual series and frequency series. Do I also have to explain both of them? Individual series and discrete series. Okay, individual series and discrete series. Fine. What is the difference between individual series and discrete series? Not Bhumika. The rest. What is the difference between individual series and discrete series?
We have only two types of free series. Kashish Kapdi. Yes, ma'am. Do we have only two types of statistical series? Ma'am, broadly, yes, we have individual and frequency series, and in them we have like different divisions as subparts. And the basic difference, if I speak about individual and frequency series, is that individual series have Nahi beta. one. Kashish, I must correct you people here. We have three types of statistical series. One Yes, is ma'am. individual, other one is discrete, which is also known as a frequency array, and the third one is continuous series, which is also known as a frequency distribution. And then frequency distribution has another different parts. Okay. I thought like continuous could also be a subpart in the second one. No, frequency array or discrete series and continuous series or frequency distribution. Continuous series or frequency distribution एक है, discrete series and frequency array एक है, and individual series. So there are three series. Okay, ma'am. I know. Okay, have you written? Have you written? Or Yes, shall I show ma'am. the PPT? क्योंकि मैंने PPT तुम्हें दिखाया, I do remember. ये देखो, three types of statistical series: individual series, discrete series, and continuous series. ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, could you kindly send this PPT in the group as well, like if you could? I think I have sent this PPT in the group. No, ma'am. No, ma'am. Okay, ठीक है, आज मैं कर देती हूँ, आज मैं डाल देती हूँ, ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay, now how will you explain the difference between all the three? Who will explain me the difference between all the three? Yeah, I received Paridi Bambani one hand. Only one? मोहित, चलो मोहित, आज अब तुम एक्सप्लेन कर दो तीनों. यस मैम. मैम, इंडिविजुअल सीरीज में ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल तरीके से हम लोग बताते हैं, जैसे कि रोल नंबर 1 के 20 मार्क्स, रोल नंबर 2 के 30 मार्क्स, ऐसे इंडिविजुअल तरीके से. अब मैं बताती हूँ, ठीक है, तुम्हारा तरीका थोड़ा सा उसमें चेंज करना कि in individual series each and every item has given a weightage. That is an individual series. ठीक है बेटा? यस मैम. हाँ बोलो, अब बोलो. मैम, in individual series every item has its own weightage and it is different from फिर तुम others. एग्जांपल दे सकते हो मुझे. हाँ बोलो. Like if we take example, roll number 1 has secured 30 marks, roll number 2 has secured 20 marks, like this. They are individual. In frequency series we have people combined in a group or data combined in a group. Like 20 marks are secured by 3 people, 40 marks are secured by 10, like this. And in frequency distribution we have a class interval, like from 10 to 15 marks there are secured by 2 people, from 15 to 20 it is secured by 3, from 20 to 25 it is secured by 4 people, like this. Okay, fine. Anyone else want to add to it? Otherwise, put your hands down. Anybody? Nobody? Okay. Now, other statistical series में types of continuous series में कौन-कौन से types हैं? कौन-कौन से types हैं? Gurnur Kalra, Mohit Chaudhary. Okay, Gurnur, you can explain. Yes, ma'am. Yeah. In different types of frequency distribution series, we have two types of series, exclusive and inclusive series. So in Very good. exclusive series, every class interval excludes the item corresponding to its upper limit. In other words, if in the first class interval, the upper limit is 20, so in the second class interval, the lower limit will also be 20. Okay. Then in inclusive series,
it includes all the items up to upper limit. So, so if, for example, if in the first class interval the upper limit is 20, so in the second class interval the lower limit would be 20. Okay, so the upper limit is different and the lower limit is different in the inclusive series. ठीक है. And what is the another type? ये तो हमने एक inclusive series, exclusive series. उसके अलावा भी तो मैंने बताया है. या कशिश? There are other types such as more than, less than series. Simple and cumulative frequency. Yeah, simple and cumulative Simple and frequency. cumulative frequency. Mid-value frequency series. Open-end series. Open-end series and mid-value frequency series. Yeah, mid-value frequencies. है ना? बस हमारा ये हो गया चैप्टर यहाँ पे फिनिश ऑफ. तुम लोगों ने वो किया, क्वेश्चंस किया जो कल मैंने भेज दिया था तुम लोगों को? हाँ मैम, आपको सेंड कर दिया. हाँ, एक दो मैम सेंड नहीं किया आपने. सेंड मत करो यार, मुझे सेंड मत करो यार, मेरा फोन पूरा भर जाता है. प्लीज मुझे सेंड मत करो. और वो मेरे को निकालना भी नहीं आता फोन में से, कैसे सब फाइल वाइल सब कैसे डिलीट करते हैं वो भी नहीं आता. चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ. यू जस्ट लेट मी नो. देयर आर डैश टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज 8, 5, 3, 6. There are dash 3. types of. Exactly, the answer is 3. Class interval is a group made by dash limits. 2 limits, 3 limits, 5 limits, 4 limits. 2 limits. 2 limits. Exactly. 2 limits. Frequency is the number of dash and observation repeats in the series. Years, weeks, days, times. Times. Yeah, it is time. When data is classified on the basis of area, when the data is based on the cases of area, it is known as Geographical classification. Yeah, it is geographical classification. Cumulative frequency series are of dash types. 4, 3, 2, 6. 2. 2, ma'am. 2. Exactly, it is 2. कौन-कौन से हैं? One is your exclusive and inclusive series, simple and cumulative series. Okay, याद रखना हमेशा. Attributes represent dash character of an item. Attribute, quality, quantity, numerical, none of this. Quality. Exactly. Dash is the subject matter of statistical study. Dash is the subject matter of statistical study. Data. Data. Ma'am, raw data. Data. Dash is the subject matter of statistical study. Population or universe. In dash classification, data are classified according to the time. Chronological. In a series, the upper limit of one class interval is lower limit of other class interval. Exclusive series. Dash is the subject matter of statistical studies. बोल दिया मैंने. छड्डो. Classified data is better than raw data. True or false? True. Classified data are better than True. Okay, true or false? It is true. Okay, next is कहाँ चला गया? Okay.
Data classified on the basis of characteristics which are numerically expressed is termed as qualitative classification. True, false? False. 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 Very good, very good, very good. Beautiful. चलो भाई, हो गया तुम्हारा ये चैप्टर पूरा. इसमें ना मेरे पास केस स्टडी भी है. मैं तुम लोगों को यार इसको कैसे मैं भेजूं तुम्हें यार. क्लिक करके भेजूं क्या, तुम लोग करोगे? हाँ मैम. यस मैम. Yes, ma'am. ओके, चलो मैं तुम लोगों को असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस क्लिक करके भेज रही हूँ अभी. ठीक है, अभी के अभी. बट यार मुझे क्लिक क्लिक करना आता नहीं है. एक मिनट रुको. मैम लैपटॉप में आपके? हाँ बेबी, लैपटॉप में. रुको रुको, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. नहीं, लैपटॉप पे नहीं बेटा, मेरे पास बुक में है. मैंने एक नई किताब खरीदी है तुम इंटेलिजेंट लोगों के लिए. तो वो उस नई किताब में असर्शन और इसके रीजनिंग के कैसे लेंगे यार. ये तो शेड आ रहा है. पता नहीं, ये देख लेना बेटा, मेरे को समझ ही है कि नहीं. एक बार चेक करो. अरे यार कैसे करूं यार. तो एक मिनट रुको. ओहो, देखना बेटा, शायद हो सकता है कि इतने अच्छे से भी ना आए तो मुझे बताना. मैं भेज तो रही हूँ. देवांश गर्ल हैज लेफ्ट. यार इसमें ये क्यों लाइट आ रही है. एक मिनट रुको. फिर भी ये वाली लाइट आएगी. यार थोड़ा सा चलेगा. अच्छा तो आया है. देखो मैं भेज रही हूँ तुम लोग को ग्रुप में. एक बार चेक करो. चाणक्य है ना. यस मैम. मेरे इसका वो आ रहा है. स्कैन पूछा, उसने स्कैन किया नहीं है. एक मिनट रुको. हाँ मैम ठीक है. ठीक है. यस मैम. Yes, ma'am. The photo is nice. फोटो इज ओके. यस मैम. यस मैम. ठीक है, छोड़ दो फिर. दूसरा भेज रही हूँ, रुको. थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है. ऐसे आ रहा है. ये भी भेज रही हूँ.
कर लो बेटा, ये करो। असर्शन के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद तुम्हारे पास केस बेस्ड स्टडी के एक क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ मैम ठीक है, ये भी। इसको कंप्लीट करना, ये ठीक है? दूसरा वाला भी ठीक है? हाँ मैम। यस मैम, रीडेबल। यस, चलो बैठो एंड करो। ओके, वैसे भी टाइम हो गया। टेक केयर। थैंक यू मैम।